लीडरशिप स्ट्रैटेजी आप बेगराज ग्रुप में फॉलो करते हैं कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, इतने साल से आपका काम हर साल बढ़ता जा रहा है, तो आपकी लीडरशिप की कोर स्ट्रैटेजी क्या है? सी बेसिकली लीडरशिप स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. वी हैव डिवाइडेड आवर टीम्स इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स. एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है. सो इस तरीके से 4-5 कोर डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है. सो बेसिकली प्राइमरीली हमने पूरे ग्रुप को 4 से 5 कोर डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है. एंड वी हैव समवन हेडिंग ईच डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल सेक्टर्स. लाइक मार्केटिंग इज हेडेड बाय समवन. सो अब क्या है कि दे आर रिप्रेजेंटिंग their segment to us, they are coordinating us, and under them अब जैसे हमारे 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो एक मार्केटिंग हेड जो है उसके अंदर 10 फर्दर प्रोजेक्ट हेड्स है. मार्केटिंग प्रोजेक्ट हेड है, मार्केटिंग ऑपरेशंस हेड है, ऑपरेशन जो चीफ ऑपरेशन हेड है हमारे, उसके अंदर फिर फर्दर 10 प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग उनको रिपोर्ट करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एंड I have personally found it to be very successful. इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, इससे रिपोर्टिंग भी काफी क्लियर रहती है. अभी सपोज कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ इशू अगर होता है तो we can trace it down to the bottom. So what is the core issue? And whenever we are performing well in any segment, then also we have a analysis on what things we are doing right. So ये एक simplified transparent structure है जिसके वजह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, काफी क्लियर एनालिसिस कर सकते हैं, वो जो हमें एक सेल्फ फीडबैक के फॉर्म में काम करता है. एंड it helps tremendously in improving performances. So of course, currently what really happens in the organization is that any land parcel or any deal that is available in the market today, of course, for sure comes to us, for sure, whether we refuse or we take. The idea, of course, is to, of course, analyze the deal to understand whether there is enough. So normally we do, most of the projects that we are doing is joint venture, which means that the landowner brings the land, we bring in our capability to construct, to sell, etc., and it's a partnership. In partnership, you have to understand that कुछ पार्टनर अच्छे होते हैं, कुछ पार्टनर ठीक होते हैं, कुछ पार्टनर खराब भी हो सकते हैं. You have to run with them today. You have to ensure that हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम हर पार्टनर को उसी तरह ट्रीट करते हैं कि भैया हम लोग को अगर उनको if you have to send some MIS report every month, then that should be sent. If you have to send some pictures to them that what is the progress of the construction, how we will complete, when we will complete, etc. Whether these landowners are there or maybe our lawyers are there or our brokers are there, etc. In an organization, if you want to grow an organization, you must have the right partners. Right. Second aspect of our business, I think, is that why also I think we are successful is that we have a great design team. We have about 10 to 12 architects that work with us in-house. And we work with the best of the architects. We work with architects from US, from Singapore, etc. The design of a building is, in my mind, the most important aspect of any good project. If you're not right with the design, or you don't understand, वहाँ पे 2 bedroom या 3 bedroom या 5 bedroom या 6 bedroom, 5,000 square feet apartment, 10,000 square feet or 1,500 square feet, you must understand the pulse of that micro market. If you don't understand the pulse of the micro market, you will for sure go wrong. So of course, understanding the pulse of the market, understanding your landowner, understanding किस टाइप का डिजाइन बनाए, efficient कैसे डिजाइन बनाए, etc. And then of course execution timelines. In my mind, our most important strength of the organization is design. Subsequently, our most important strength is sales, because at the end of the day, if you keep delivering on your promises, customers will sure come back. And if you're able to sell properly, then of course construction bit, of course, if you have a great team to manage, of course we have project managers from LLG or Shapuji, etc., where they have maybe delivered certain projects, etc. To have the right talent, to hire the right talent, even if you're paying top dollar or top money to them, is important, because you, at the end of the day, if you're promising or committing your customers that कि हम 3 साल में बना देंगे, 4 साल में बना देंगे, आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट का है कि लोग कमिट तो कुछ भी कर देते हैं, टाइम पे कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है. आज के दिन में रेरा आने का
रीजन यही है कि 90% ऑफ प्रोजेक्ट वेदर इन एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, सब 90% ऑफ प्रोजेक्ट डिले, मतलब दैट इज द मोस्ट। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है फिर कंज्यूमर का कि भैया उनका तो रुपया लग जाता है, उन लोगों ने बैंक लोन ले लिए होते हैं, उनका ईएमआई चालू हो जाता है, उनका इंटरेस्ट लग रहा होता है। आज के दिन में टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर कि आपने अगर कमिट किया मैं 3 साल में बना दूंगा, 4 साल में बना दूंगा, आपको 4 साल कमिट करो तो 3.5 में बना दो, 3 करो तो 2.5 साल में बना दो, तब आपके साथ आपके कस्टमर जुड़े हुए रहेंगे, तभी आपको रेफर करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कीप योर प्रोमिसेस there is no reason why you can't grow as an organization. Right. So whether it's land or whether it's to understand what kind of product design is required, or whether it's to do efficient designing, and then of course doing the construction properly. These are the aspects of course any organization. But you know, लोग भटक जाते हैं हमको लगता है, या somehow or the other if you don't मतलब एक बार हो सकता है कि you can take people for a ride, but of course if you want to be a long term sustainable developer of real estate, you must stick to your promises. And I think that's one of our key mantras कि अगर मैंने बोल दिया, मैंने अगर लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि मैं ये करूंगा, मैं इतने परसेंटेज दूंगा, मैं ये करूंगा, we never go back, we never renegotiate, etc. We don't do all these things. We will stick by. I'll tell you a story. So I met one landlord. I was negotiating with him maybe about 20 years back. We struck a deal, and he was an architect also. So I did the building, etc. Subsequently, वो लैंडलॉर्ड आया मेरे ऑफिस में, मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था, तो लैंडलॉर्ड ने मुझे पूछा कि क्या हो गया भैया। मैंने कहा कि यार आपके प्रोजेक्ट में सर आई हैव नॉट मेड एनी प्रॉफिट। तो वो आर्किटेक्ट बोलता है मुझे भी यही लग रहा है, मुझे मालूम है स्टील का प्राइस क्या है, मुझे मालूम है सीमेंट का प्राइस क्या है, मुझे सब मालूम है, मुझे मालूम है कि आपने कितने में सारे फ्लैट बेचे हैं, मुझे लग रहा है कि आप हाउ डिड यू मेक एनी प्रॉफिट। आई सेड कि हाँ सर, इसीलिए मतलब वी डिडंट मेक ऑन एनी प्रॉफिट, वी थॉट वी विल बी एबल टू कट लिटिल बिट ऑफ मतलब आवर कॉस्ट विल बी अ लिटिल लोअर, और वी विल बी एबल टू इंक्रीज द सेल प्राइस, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एक्सेट्रा। तो बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा कि देख प्रशांत, एक वो फ्लैट मेरा बाकी है, तो एक काम करो, तुम ये फ्लैट बेच दो और वो रुपया तुम रख लो, और मेरी वाइफ को मत बताना, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे को बोलेगी कि आपने ये क्यों कर दिया। मतलब व्हेन यू कीप ग्रेट रिलेशनशिप विद पीपल, दे विल हैव योर बैक फॉर श्योर। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, if you are good with them, they will always be good with you. If you try to backstab them, you want to do something etc, बीच में करेंगे आप, तो लैंडलॉर्ड भी बोलेगा अच्छा आपने ये क्या, मैं आपके साथ ऐसे करूंगा। अगर you are true to yourself, I'm sure help will be available. So these examples of course tell us that कि बॉस हमने जो कमिट किया करते जाएं, 100% अच्छा ही होने वाला। अगर कुछ नहीं होगा अच्छा, तो अगर किसी को बोलेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम 100% वो सामने वाला भी समझेगा। बिल्कुल। So mantra is of course keep to your promises and deliver what you promise to your customer, to your landlord, to your whoever, to your banker, to your financer, etc, to all the stakeholders that you've done or that you've promised.